So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 10th chapter, verse number 20. एक सेकंड, मैंने और भी विंडोज खोल के रखी थी, कहाँ गई? मे बी ऑन द अदर स्क्रीन. Anyway, doesn't matter. Srimad Bhagavatam 1:10-20. अन्यो अन्योन्यम आसीत संकल्पा उत्तम श्लोका चेतसाम कौरवेन्द्रापुरा स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरः. Absorbed in the thought of transcendental qualities of the Lord, who is sung in select poetry, the ladies on the roof of all the houses of Hastinapur began to talk of him. This talk was more attractive than the hymns of Vedas. How amazing is that? The talk from these ladies on the roof of the houses of Hastinapur. ये राधा कुंड श्याम कुंड की बात भी नहीं हो रही है. It's not, they're not talking about Vrindavan. They're talking about the females who are in Hastinapur. They know Krishna, they're talking about Krishna, and this talk is more attractive than the hymns of the Vedas. How amazing is that? Let's read the purport. Who wants to read the purport? Prabhuji, I can read it. Yeah. In the Bhagavad Gita, it is said that in all the Vedic literatures, the goal of personality of Godhead, Sri Krishna. Factually, the glories of the Lord are depicted in such literature as the Vedas, Ramayana, and Mahabharata. And in the Bhagavatam, they are specifically, sorry, Prabhuji, स्क्रीन गई? हाँ ओ स्क्रीन में. ओ मैंने ना गलत बटन दबा दिया. So sorry. Sorry. Can you see it now? Yes, Prabhuji, now can see it. And in the Bhagavatam, they are specifically mentioned in the respect to the Supreme Lord. Therefore, while the ladies on the top of the house in the houses in the capital of the kings of the Kuru destiny were talking about the Lord, their talk was more pleasing than the Vedic hymns. Anything sung in the praise of the Lord is Shruti mantra. There are songs of Thakur Narottam Das on one of the acharya in the Gaudiya Sampradaya composed in simple Bengali language, but Thakur Vishwanath Chakravarti, another very learned acharya of the same Sampradaya, has approved the song by Thakur Narottam Das to be as good as Vedic mantras. And this is so because of the subject matter. The language is immaterial, but the subject matter is important. The ladies who were all absorbed in the thought and actions of the Lord, developed the consciousness of Vedic wisdom by the grace of the Lord. And therefore, although such ladies might not have been very learned scholar in Sanskrit or otherwise, still whatever they spoke was more attractive than the Vedic hymns. The Vedic hymns in the Upanishad are sometimes indirectly directed to the Supreme Lord, but the talk of the ladies were directly spoken of the Lord, and thus they were more pleasing to the heart. The ladies' talks appear to be more valuable than the learned Brahmana's benedictions. Hare Hare Krishna. Krishna. Beautiful. Now, such an incredible, like, दो लाइन का translation है. But unless you read this purport, you would not understand what is the depth of these two lines, And this is the power of Srila Prabhupada. He actually brings things together. I'm gonna bring up another one, this one as well, just in case we were going to talk about this anyway. So what's happening now is this today's topic, मैंने ना क्या करा है, जब अब मैंने सोचा है कि whenever I do the class, I will share some of the notes from the class as well. Possibly जो भी it मैंने the key points में डाले हैं, but I will share these notes in the after the class so people can easily understand where we're coming from when it comes to these things. Now what's happening is here is translate, like in the translation it says
women of Hastinapur deeply absorbed in the thought of Lord Krishna. Now, if you think about it, there is a verse in Bhagavad Gita. एक second रुको मैं. Can you guys still see my screen or you can't? No, Prabhuji, not anymore. Okay. So what I'll do is I'm going to share the screen. There is a verse in Bhagavad Gita, 15.15. I'm pretty sure you guys probably know anyway. The 15.15 says, Sarvascha chaham hriti sannivishto matte smritirgyana pohanam cha vedesha sarve aham vedyo vedanta kritved vid eva chaham. I am seated in everyone's heart and from me come remembrance. है ना? मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम, है ना? ये सारी चीजें कहाँ से आती है? मेरे से ही आती हैं. एंड देन इट सेज वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो. By all the Vedas I am to be known. And indeed I am the compiler. Vedant Krit. Yani I am the compiler of Vedanta. And Ved Vid evacha aham cha aham. है ना? That means मैं कौन हूँ? I am the compiler of Vedanta and I am the knower of Vedas. Who is saying that? Bhagwan Shri Krishna is saying that. Now in here, if you see, it says that this talk was more attractive than hymns of Vedas. अब यहां पर भगवान कह रहे हैं I am the Vedas. That means what he's saying is basically even sweeter than the Lord is pastimes of the Lord. Even sweeter than the Lord is pastimes of the Lord. This is very, very hard to understand for a logical mind. Like, इसका मतलब क्या है? I like, I don't, I like someone's pastime more than that person. Because the pastimes of that person is more purifying. Actually, we shouldn't say more purifying, it's equally purifying. But it person need not to be there in order for us to enjoy that pastime. Now, if you think about it, परपोर्ट में शिला प्रभुपाद बहुत सारी चीजें इसमें डाल रहे हैं. हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? अकॉर्डिंग टू माय नोट्स, वी विल टॉक अबाउट वैदिक लिटरेचर का अल्टीमेट गोल क्या है. वी डिस्कस्ड जितने भी वेदा हैं उनका क्या है? बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन. दैट मीन्स अगर कोई वेद वित है, मतलब जिसने वेदों को पढ़ रखा है, बट ही डज नॉट नो कृष्णा, देन इट्स यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम. श्रमः एव ही केवलम. ये बात हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि एनीबडी इज डूइंग एनी काइंड ऑफ थिंग, if they don't understand Krishna, then that all that knowledge is useless. By all Vedas I am to be known. है ना? कई लोग होते हैं जब वेद पढ़ते हैं, उनका क्या कंक्लूजन होता है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. वेदांत का मतलब होता है वेदों का सार, है ना? वेदों का अंत, वेदांत सारा का सारा निचोड़ जो होता है उसको कहते हैं वेदांत. वेदांत सूत्र में एक सूत्र आता है अहम ब्रह्मास्मि और एक सूत्र आता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. उनको लगता है दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल द वेदास. नो, एसेंस ऑफ वेदास किसके लिए लेके गए? फॉर ऑल ऑफ अस टू गो बैक होम, बैक टू गॉड. अगर और इसमें शिला भगवान जिन्होंने ये वेद लिखे हैं, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम च अहम, भगवान ने लिखे हैं. तो भगवान खुद बोल रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही बोल रहा है इसको किस लिए बनाया गया है. इसको बनाया गया है सो दैट आई एम टू बी नोन. एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. जिसको नहीं समझ में आएगा, दैट मीन्स ही हैज नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, है ना? सो नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, ग्लोरिफिकेशन जो है भगवान का, वो हर जगह है. ठीक है? जो ग्लोरिफिकेशन, एक्चुअल ग्लोरिफिकेशन है, दैट इज देयर इन, एक सेकेंड, कहाँ गया? एक्चुअल जो ग्लोरिफिकेशन है भगवान का, वो सब जगह है. ठीक है? मेरी स्क्रीन गायब हो गई फॉर सम रीजन. You guys can what do you guys can see? Sharing screen. Sharing screen only, na? Okay, that's okay. Oh, there it is. Found it. हाँ,
तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड इन द स्क्रिप्चर्स, ग्रेट स्क्रिप्चर्स लाइक वेदास, कौन कौन से लिटरेचर जिसमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन है? जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गई, ठीक है। इसमें क्या है, भगवान के बारे में बहुत जबरदस्त जबरदस्त हाईलाइट दी हुई है भगवान के पास टाइम्स की, है ना, भगवान श्री कृष्ण की। स्पेशली ये श्रीमद् भागवतम है, इसमें भगवान की ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ही सेंटर ऑफ द होल डिस्कशन है। वेद क्या करता है? वेद इज डिजाइन्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल, every kind of people, like you can think of any kind of people that you can think of. The Ved was written for them. Someone who is in a mode of tamogun, mode of ignorance, उसके लिए भी वो जब वेद पढ़ेगा, he will step up. Someone who is in mode of passion, वो वेद पढ़ेगा, he will step up. And step up to what? तमोगुण वाला सतोगुण में रजोगुण में आएगा, और रजोगुण वाला पढ़ेगा, someone who is in a mode of passion, वो पढ़ेगा तो he can get into the mode of goodness. If the tell me, if someone is reading Vedas, if he is in a mode of goodness, what can happen to him? Where would he go? Come on. सॉरी प्रभु जी, वापस से रिपीट कर, मैंने अगर To जैसे the God, तमोगुण में जो बंदा है, वो अगर वेद पढ़ेगा कृष्ण के तो, पास जाएगा वो, हाँ कृष्णा के पास जाएगा। हाँ, कैसे जाएगा? कौन से गुण में जाएगा? ये तीन गुण हो गए, सद्गुण, रजगुण, Transcendental. ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, वो शुद्ध सत्व में चला जाएगा। इफ समवन हु इज ऑलरेडी इन सतोगुण, तो जब वो वेद पढ़ेगा, क्योंकि उसको उसी को समझ में आएगा कि वेद का मतलब क्या है। पीपल हु आर इन सतोगुण, दे कैन रीड वेदास एंड दे कैन अंडरस्टैंड दिस, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, भगवान श्री कृष्ण को जानना ही अल्टीमेट गोल है वेदों का। जो वो उसी को पता चलेगा जो शुद्ध, जो सत्व गुण में है, जो सतोगुण में है, वो अगर वेद पढ़ेगा तो वो शुद्ध सत्व में जा सकता है। और ये जो श्रीमद् भागवतम लिखी गई है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी शुद्ध सत्व में। एक्चुअली इट्स रिटन फॉर डिवोटीज ओनली, लेकिन दिस इज द मर्सी ऑफ आर आचार्य शिला प्रभुपाद एंड उनके गुरु महाराज एंड एवरीवन, चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान खुद हैं, जिनके कारण वी हैव एक्सेस टू दिस। नाउ श्रीमद् भागवतम, अगर मैं ये श्रीमद् भागवतम उठा के मैं MIT के किसी प्रोफेसर को, जैसे MIT में ना अभी देर इज द होल ब्रांच कॉल्ड रिलीजन, है ना, एक ब्रांच है, एक उसमें अलग अलग तरह के रिलीजन पढ़ाए जाते हैं। उसमें से एक ये श्रीमद् भागवत, ये जो है ना, शिला प्रभुपाद का इस्कॉन के बारे में भी पढ़ाया जाता है। Now, these guys can read Srimad Bhagavatam as well, but they will not get the essence of Srimad Bhagavatam, because Srimad Bhagavatam cannot be learnt and understood by the scholarly erudite understanding of things. Erudite लोग पढ़ेंगे, जरूरी नहीं उनको समझ में आएगा। In order for us to read Srimad Bhagavatam, we need mercy of भगवान श्री कृष्ण, एंड भगवान श्री कृष्ण की जो मर्सी होगी वो कैसे आएगी? when we are actually studying this under चैतन्य महाप्रभु and under the guidance of शिला प्रभुपाद, है ना। तो क्योंकि इसमें शिला प्रभुपाद के परपट हैं, the person who is studying this in MIT, if that person is reading on its own without any guidance from a devotee, then he will misconstrue it as well, है ना। So इसीलिए कहते हैं, it is important for us to make sure that when we are reading Srimad Bhagavatam, we are reading in the association of devotee, pure devotee, like Srila Prabhupada. We are reading in the association of Srila Prabhupada, and we are discussing within the devotee community. So we can actually relinquish more. Now, when we are doing this coded language of Srimad Bhagavatam is revealed to us through the mercy of these devotees. Now, द पावर ऑफ भक्ति, इसमें एक और चीज आती है इस परपट में, पावर ऑफ भक्ति एंड डिवोशनल टॉक, ना। जैसे ये औरतें आपस में बात कर रही हैं, दीज विमेन आर नॉट स्कॉलरली, दे हैवंट गॉन टू क्या बोलते हैं, अपने गुरुकुल में जाके शास्त्रों का अध्ययन करा हुआ हो, वेदों का। नन ऑफ दीज गर्ल्स विमेन हैव एनी ऑफ दोज क्वालिफिकेशन। दे वर वेरी सिंपल टाउन लेडीज, है ना, दे वर हाउस वाइफ्स, the way, but because they were so pure, because they were living in the association of Pandavas, and they are so simple, their discussion is more potent and sweeter than Vedic hymns.
बिकॉज वैदिक हिम्स में भगवान की डायरेक्ट प्रशंसा नहीं हुई है, डायरेक्ट उनके बारे में बात नहीं हुई है, इनडायरेक्टली भगवान को बताया गया है उसमें, है ना। बट यहाँ पर दीज women आर सो सिंपल, दे वर टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट कृष्णा, therefore their discussion is more potent and sweeter than the whole pastime. So these ladies, इनको कुछ नहीं पता था, स्कॉलरली नॉलेज नहीं थी। उनको पूछो कि कौन है हलादिनी शक्ति, क्या है ये है वो, उनको कोई मतलब नहीं है हलादिनी शक्ति और संवित शक्ति और और नन ऑफ दिस, इट डजंट मैटर टू देम। उन लोगों को क्या पता है, कृष्णा उनका पास टाइम, ही इज सो स्वीट, ही इज अमेजिंग, दे टॉकिंग अबाउट हिम एंड दैट्स इट। हम लोग इतना किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि वी डोंट लव कृष्णा, एक्चुअली वी डोंट। we have a little bit of adoration about him because हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, but we actually don't love him. In order for us to love someone, we need to know him, and these scriptures give us the access to knowing him. इसीलिए scholarly knowledge is not actually necessary to for these people because they're already devotees. For us to become devotees, we need knowledge, है ना। Now कैंटो 10 में मैंने आपको बताया ना, जो now will be share my screen again. कैंटो 10 में कहाँ गया, 10.32/20। न पार्येहनं निर्वद्य संयुजां स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषायपि व या मा भजन दुर्ज रगेह शंखला संवृश्य तद्वा प्रतियातु साधुना। कौन बोल रहे हैं, ये गोपियां क्या बोल रही है, आई एम नॉट एबल टू रिपे माई डेट फॉर योर स्पॉटलेस सर्विस इवन विद दिस इज सॉरी I am not able to repay my debt for your spotless service, even within a lifetime of Brahma. Your connection with me is beyond approach. You have worshipped me. ये कृष्णा बोल रहे हैं, ठीक है। You have worshipped me, cutting off all domestic ties which are difficult to break. Therefore, please let your own glorious deeds be your compensation. आप सोचो, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि I can't compensate you. आप सोचो, gopis, they were so dedicated to Krishna, even they have no formal Vedic knowledge. क्या बोल रहे हैं वो, भगवान उनको बोल रहे हैं कि भैया मैं तुम्हारा डेट ही नहीं चुका सकता। आई एम नॉट एबल टू रिपे माई डेट टू फॉर ये स्पॉटलेस सर्विस। कैन यू इमेजिन, लाइक थिंक अबाउट दिस। आपको दुनिया, जेफ बेजोस, लाइक राइट नाउ आई थिंक ना इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, है ना। ना इलॉन मस्क आके बोलता है कि मितुल प्रभु, आई एम, मेरे आपका उधार मेरे पे इतना है कि मैं अपनी सारी संपत्ति से आपको चुका नहीं सकता, है ना। ये डिस्कशन कोई सुनेगा तो दे विल से ओके, मितुल मितुल प्रभु इज रिचर देन Elon Musk because Elon Musk cannot repay his debt. Now Krishna is saying, I'm not able to repay my debt for your spotless service. What does that mean? That means the who is most opulent? The gopis. Because Krishna, who is the supreme personality of Godhead, who is a supreme person in the whole universe, cannot pay the debt of gopis. And that is what shows the unparalleled devotion. And that's why in this one 10:32 10:32:22 mein, he's saying I'm forever indebted. you know that is why हम लोग हम we I don't, maybe you guys, some of you can understand this, but for me it is baffling. I can't understand this thing, literally I can't, because it is far beyond me. Like you have indebted who? Someone who everybody is indebted with, है ना। नाउ एक तो ये चीज आ गई। द नेक्स्ट थिंग इज, तो अभी हमने क्या देखा कि भगवान की पावर, भक्ति की पावर और डिवोशनल टॉक की पावर क्या है, कि डजंट मैटर आप एरोडाइट स्कॉलर हो या नहीं हो, डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज what are you talking about? Do you have that bhav for Krishna? If you have that bhav, then you are actually amazing, है ना। Now the second thing comes, क्योंकि ये तो simple ladies थी, they don't know how to poetically बताना लोगों को, जैसे आजकल बड़ी
जितना पोएटिकली कोई एक्सप्लेन कर पाता है, पीपल गेट अट्रैक्टेड टू दैट पोएटिक कंक्लूजन और पोएटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। उनको लगता है वाह यार अमेजिंग था। अभी एक प्रभु बता रहे थे कि उन्होंने किसी से पूछा कि यार कहाँ से आ रहे हो? बोले श्रीमद् भागवतम क्लास से आ रहा हूँ। कैसी थी क्लास? ओ प्रभु मजा आ गया, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा सब कुछ ऊपर से गया, मजा आ गया। मतलब उनको क्या लगता है, जब कुछ समझ में नहीं आता है दैट मीन्स इट्स अ हाइट ऑफ एक्सटेसी, हाइट। उनको लगता है कि अमेजिंग क्लास थी। क्यों अमेजिंग क्लास थी? क्योंकि समझ में नहीं आया। इतना एरोडाइट तरीके से उन्होंने बोला। इन हियर द सब्जेक्ट दैट आई वाज थिंक पुटिंग इन द नोट्स इज लैंग्वेज इज सेकेंडरी, सब्जेक्ट मैटर इज प्राइमरी। आप सोचो, एक छोटा सा बच्चा है, वो तोतली आवाज में अपनी माँ को बोलता है मम्मा मैं आपसे प्यार करता हूँ, है ना। और एक बड़ा जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एक माँ के लिए एक पोयम लिख देता है। विच वन इज मोर स्वीटर स्वीटर? वो तोतली आवाज में जो वो उसने बोला है दैट इज मोर स्वीटर। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट मैटर इज इंपॉर्टेंट, है ना। सब्जेक्ट मैटर इज इंपॉर्टेंट। व्हेन वी ग्रो अप, हमारे पास अपने भी बहुत सारे बैगेजेस हो जाते हैं, ठीक है। हमारा जो प्यार होता है ना अपने पेरेंट्स के लिए, समटाइम्स आई थिंक इट कैन नॉट बी एज प्योर एज आवर लव व्हेन वी वर लिटिल। व्हेन हम छोटे थे ना, तो जब हम लोग छोटे होते थे, हम लोग पूरी तरीके से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते थे, तो हमारी जो लैंग्वेज होती थी ना, इट्स एक्चुअली सेकेंडरी। वो अब देखो, लैंग्वेज सेकेंडरी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो लोग बोल नहीं पाते हैं, दे स्टिल कम्युनिकेट ना। लैंग्वेज इज व्हाट? लैंग्वेज इज हाउ कैन आई कम्युनिकेट, ठीक है। अब वेदर अब इंडिया में क्या है, एक फैलेसी हो गई है कि इफ यू कैन टॉक इन इंग्लिश देन दैट मीन्स यू आर स्कॉलरली। अगर आपकी एक्सेंट अमेरिकन एक्सेंट से मैच करता है ना, that means you're scholarly. If you can talk in British accent, then you are actually scholarly. No, actually क्या है, there is language is actually secondary. The first primary thing is the subject matter. अगर आप अगर आप अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे हो बट you're talking all rubbish nonsense, what's the point? है ना। कोई आपको अमेरिकन एक्सेंट में गाली देगा तो बोलोगे यार क्या मजा आ रहा है, क्या मस्त, देखो क्या मजेदार अमेरिकन एक्सेंट। तो लड़कियों को ना ब्रिटिश एक्सेंट बहुत पसंद आता है ना। सपोज ब्रिटिश एक्सेंट में गाली दे रहा है तो आपको क्या अच्छा लगेगा? अरे वाह वाह वाह, क्या कान में मिश्री घुल गई आप, है ना, उनकी आवाज सुन के। नो, दैट्स नॉट, बिकॉज इट्स नॉट द लैंग्वेज दैट मैटर्स। लैंग्वेज इज सेकेंडरी, व्हाट मैटर्स इज द सब्जेक्ट मैटर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, है ना। So I know, I remember like Srila Prabhupada. Our Srila Prabhupada accent was a very thick Bengali accent, है ना। तो वो यज्ञ भी नहीं बोल पाते थे, जग्न बोलते थे, या नहीं बोलते थे, या को ज बोलते थे। मेरी मम्मी भी या को ज बोलती हैं, है ना। दैट इज इन टर्म्स ऑफ phonetics, it's not correct, but it's not important. Language and your accent, your phonetics are not important. What important is what are you talking about? What subject matter are you using? The true essence of a spiritual discourse lies not in the language, but in subject matter. And what is the subject matter which is much more glorious? Is glories of the Lord. That's it. Doesn't matter आपको कौन सी लैंग्वेज में। एक बार शिला प्रभुपाद ने क्या करा, शिला प्रभुपाद सेड, उनके जो नए नए डिवोटीज इंडिया गए थे, तो शिला प्रभुपाद के कोई गॉड ब्रदर थे, ही वाज टॉकिंग इन गिविंग ए क्लास, श्रीमद् भागवतम क्लास, बट द क्लास वाज इन हिंदी, तो और बंगाली, आई कांट रिमेंबर। तो उनके डिसाइपल थोड़ी देर बैठे, फिर वापस आ गए शिला प्रभुपाद के पास, बोले शिला प्रभुपाद वो तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिला प्रभुपाद बोलते नो, गो बैक एंड सिट डाउन। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, योर सोल इज अंडरस्टैंडिंग। Doesn't really matter what language it is. Srimad Bhagavatam, your soul understands it. So it's not important what language it is. What is important is what is the subject matter, है ना। इसीलिए यहाँ पर शिला प्रभुपाद इस वाले श्लोक के परपट में भी बताते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर wrote songs in simple Bengali, but they are considered to be equivalent to Vedic mantras. Literally, when you like सुबह हम लोग पढ़ते हैं ना, संसार दावा नलली दरोका त्रणय कारुण्य घना घना, तो यार ये जो this is no less than Vedic hymns, because it has the same potency or even more potency, because it's glorifying Guru and Krishna directly rather than घुमा फिरा के कोड लैंग्वेज में बात करने की जगह, है ना। अब शबरी का एग्जाम्पल लेते हैं।
Shabari was a tribal woman. Tribal woman मतलब she was not even literate. Literate का मतलब हो गया she couldn't even read and write. वो संस्कृत और वेदास तो भूल ही जाओ. She did not know anything, but her heart was full of Lord Ram. 68 years she waited. 68 years. हमारे साथ क्या होता है, 15 मिनट हम हस्बैंड लेट हो जाता है तो वाइफ को लगता है कि उसकी किडनी विडनी मांग ली हो गई, है ना. 15 मिनट जितना वो नहीं है. Shabari waited for 68 years. Every single day, she would pluck fruits, flowers. Every night, she will say, okay, that's fine. He didn't come. Maybe tomorrow. Then tomorrow, she will get up and she'll clean again, thinking, today my Lord will come. And they did that for 68 years. And because she was full of love, she did not come and say, oh Lord, you're so beautiful. You are this. I'm going to give you these prayers. I'm going to recite a poem, 64 different phonetics के साथ में आपके लिए मैंने एक कविता लिखी है, प्लीज सुनिए आप ये ना. उन्होंने क्या बोला, भगवान ये बेर खाओ, मैंने खाए हुए हैं, ये आपके लायक है. झूठे बेर खिलाए उनको. And he lovingly accepted it because he was not after those bear or sweets. He was after bhav. He is bhavagrahi. He was after that, the love that she has for her. And जो उन्होंने भगवान को सिंपल लैंग्वेज में बोला कि थैंक यू फॉर कमिंग, दैट वाज इनफ फॉर भगवान श्री राम, मोर देन इनफ. He did not need her to compose beautiful songs and पूरा ऑर्केस्ट्रा बुला के बोला, नाउ लेट्स प्ले मृदंगा, लेट्स प्ले हारमोनियम, लेट्स प्ले बिग करताल, आई एम गोना सिंग फॉर श्री राम. नो, she just said, Bhagwan Shri Ram, I love you. And that was enough. So, what is important? Language is not important. What is important is subject matter. हमारे साथ क्या है, we think language is important. हमें क्या लगता है कि throughout the whole life, throughout the whole day, I'm talking about myself mainly, throughout the whole day, throughout the whole week, I try to use my language to impress and convince people. But Srila Prabhupada क्या बोलते हैं, purity is the force, not erudite scholarship is the force. है ना. Purity is the force. The more purer you are, the more transformation you can give. You know. Next example is गोपाल, है ना. गोपाल काज, लाइक है ना. जो जो होते हैं ना, गोपास वो क्या करते थे, वो कृष्णा को अलग अलग नाम से बुलाते थे. एक तो बोलता था कि कृष्णा को क्या बोला, क्या बोलता था, देर इज अ वर्ड इन खड़ी बोली विच इज कॉल्ड वीक, है ना. हमारे हमारे राजस्थान में बोलते थे केंकड़ा. केंकड़ा मतलब कोई पतला दुबला सा एकदम वीक सा पर्सन होता है ना, केंकड़ा बोलते थे उसको. इसी तरह का नाम रख रखा था भगवान के लिए. क्यों रख रखा था, बोले क्योंकि मैं इसको अभी एक धोबी पाट दूंगा गिर जाता है ना. भगवान श्री कृष्ण को गिरा देते थे गोपास, और उनका नाम रख रखा था ना. वो सिंपल सी चीज, वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं. और वो बोलते थे, गोपास बोलते थे कि देखो तुम्हें हमारे साथ खेलना है ना, तो तुम्हें ना ये एक लड़की की तरह डांस करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पे. तो भगवान बोलते थे, मैं तो राजा का बेटा हूँ, मैं तो नहीं करूंगा. बोले नहीं करोगे तो निकल जाओ, राजा के बेटे घर में हो तुम, है ना. यहाँ पर रहना है ना, तो तुम्हारे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा. तो बेचारे लड़की की जैसे डांस करते थे, फिर भी वो उनको मना करते थे, फिर बड़ी मुश्किल से उनको खेलने में लेते थे. तो उनको द वे दे यूज्ड टू ट्रीट हिम वाज डिफरेंट. बट बिकॉज कृष्णा नोज, दे ऑल लव्ड हिम. एंड देयर सिंपल लविंग डायरेक्ट वर्ड्स जो होते थे, वो भगवान कृष्ण को ज्यादा अच्छे लगते थे, बजाय लोगों के जो भगवान को चूना लगाने में लगे हुए हैं. भगवान प्लीज, मैं तो आपके लिए एकादशी का व्रत करूंगा, बस ये कॉन्ट्रैक्ट दिला दो लास्ट, बस बस एक कॉन्ट्रैक्ट दिला दो बस. आपके एक मतलब वो भगवान को लग रहा है कि यार यार मैं दिला ही देता हूँ, वरना अगर एकादशी का ये फास्ट नहीं रखेगा तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी. ऐसा ऐसा हमें लगता है कि हम लोग भगवान पे एहसान कर रहे हैं एकादशी का व्रत करके, है ना. हमें लगता है कि हम भगवान पे एहसान कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ के. भगवान मैं रोज भगवत गीता पढ़ूंगा, प्लीज मेरे को इससे निकाल दो. अरे यार, मतलब ठीक है, आई मीन कुछ हद तक ये ठीक भी है, बट डोंट ट्राई एंड ट्रीट भगवान एज इफ वी नो मोर देन भगवान. चैतन्य चरण प्रभु बड़ा अच्छा बोलते हैं, बोले हमें लगता है भगवान क्या है, भगवान बहुत पावरफुल है,
हमें पता है, वी ऑल नो कि भगवान जो चाहे कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने एग्जाम नहीं भी दिया हो तो भी मैं एग्जाम में फर्स्ट आ सकता हूँ, मतलब इतना चमत्कार भगवान कर सकते हैं। लेकिन भगवान में एक चीज की कमी है, वो है बुद्धि की। तो हम लोग कहते हैं भगवान अपना दिमाग मत लगाओ, आप अपनी सिर्फ शक्ति लगाओ, बताऊंगा मैं आपको क्या करना है। एक काम करो, मेरे को पास करवा दो। अपना दिमाग मत लगाओ कि मेरे लिए इसमें फायदा है कि नहीं है, वो मेरे को पता है। आप सिर्फ अपनी शक्ति दिखाओ। तो हम भगवान का दिमाग नहीं चाहते हैं, हम लोग भगवान की शक्ति चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान को हमें आदि मध्य और अंत सब पता है। भगवान को पता है कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान को फोर्स करते हैं, नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को तो यही लड़की चाहिए, मेरे को और कोई लड़की नहीं चाहिए, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, मर जाऊंगा भगवान मैं इसी से शादी करूंगा। अरे भैया वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नहीं मेरे को नहीं, अपना अपना दिमाग मत लगाओ भगवान। मेरा मेरे को आपका दिमाग से नहीं कुछ काम करना है। मेरे को आप दिमाग मेरा यूज करो क्योंकि मेरा दिमाग आपसे ज्यादा अच्छा है। आप अपनी पावर यूज करो क्योंकि आपकी पावर मेरे से ज्यादा पावरफुल है। दिस इज नॉट भक्ति, है ना, दिस इज स्टुपिडिटी। वी कैन आस्क गॉड, नो प्रॉब्लम। अपने पेरेंट्स से हम लोग मांग सकते हैं, अपने पेरेंट्स से जो चाहो मांगो, बिल्कुल अधिकार से मांगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद ये भी विश्वास रखो कि जो पेरेंट हमें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसमें हमारा ही भला है। अगर मेरा बेटा मेरे से आके बोलेगा, 7 साल का है मेरा बेटा, बोलेगा पापा मेरे को सिगरेट पीनी है ना, मैं उसको 2 झापड़ मार के भगा दूंगा, है ना। सिगरेट क्यों दूंगा मैं उसको। लेकिन वही सिगरेट अगर इंडिया में वो किसी पान वाले के पास जाएगा, तो पान वाला उसको ये नहीं बोलेगा कि झापड़ मार दूंगा। पान वाला बोलेगा पैसे हैं कि नहीं है, पैसे हैं तो दे दे मुझे। पैसे दिया तो डजंट केयर कि 5 साल का बच्चा है कि 7 साल का बच्चा है, ये ले सिगरेट ले जा, है ना। ये कैसे हुआ, दिस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। पेरेंट्स हमारे लिए ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, पेरेंट्स विल गिव अस ओनली व्हाट इज गुड फॉर अस। सिमिलरली वी शुड गो टू गॉड, है ना, नो प्रॉब्लम, बट लेट हिम देन एक्सेप्ट व्हाट ही इज गिविंग अस। No problem going to him. And this is why these people who are simple, they are better than everyone. उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है कि डिवोशनल कॉन्शियसनेस होती है ना, ये स्कॉलरशिप के ऊपर निकलती है। हमने अभी डिस्कस करा है ना। जो ये लोग जो थे ये कंप्लीटली डिफरेंट थे, इनको वैदिक नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये हाई अप उसमें थे, है ना। अब विदुर जो था, विदुर जब उद्धव से बात कर रहे थे, हम लोग अभी कैंटो 3 में पढ़ेंगे, फर्स्ट 3 चैप्टर में। विदुर को जब दुर्योधन निकाल दिया था, तो विदुर चले गए थे अपनी उसमें, 4 धाम की यात्रा में। ठीक है, वहां पर उनको उद्धव मिले थे, उद्धव भगवान के कजन है ना। तो उन्होंने अ, उद्धव ने सॉरी उद्धव ने नहीं, सॉरी विदुर ने, विदुर जब उद्धव से बात कर रहे थे, उन्होंने इतना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग अपनी बताई स्पिरिचुअल विजडम की, कि अम, कि एवरीबडी वॉज अस्टोनिश्ड। ये आपको पता है विदुर कौन थे, किसी को पता है हु वाज विदुर इन प्रीवियस इनकारनेशन? प्रभु जी यमराज। Yes, he was Yamaraj. Yeah, he actually left his position to humbly serve Lord Krishna, है ना। और कैसे आया, इनकी जो बातें थी, इट वॉज अ वेरी सिंसियर डिवोशन। एंड वो क्या एक्चुअली वैदिक टीचिंग्स का एसेंस है। वो हम जब पढ़ेंगे ना चैप्टर 1 to 3 में। अभी हम लोगों ने, मैं इंडिया में जो भागवतम होती है उसमें मैंने शुरू करा है चैप्टर कैंटो 3 अभी, है ना, दो दो लास्ट वीक थर्सडे को शायद। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे हैं। ब्यूटीफुल द वे विदुर इज आस्किंग, विदुर अभी मिले नहीं है, नहीं अभी उद्धव से मिले हैं, जस्ट मिले हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछने शुरू करें हैं कृष्ण के बारे में, कैसे हैं, क्योंकि कृष्ण तब तक छोड़ चुके थे प्लेनेट, है ना। देन ही वाज टॉकिंग अबाउट उनके बच्चे कैसे हैं, सांभा और ये सारे लोग कैसे हैं। इट वाज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। एनीवे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल आता है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज, हाउ ओल्ड वाज ही, एनीबडी नोज? हाउ ओल्ड वाज प्रहलाद? 5 साल। small, yes. ही वाज 5 years old। आप सोचो सेम इज ध्रुव 5 साल। महाराज प्रभु जी। हाँ, ध्रुव महाराज भी 5 साल के थे। Okay. सो ही वॉज सो डीप इन हिज विजडम और स्पिरिचुअल नॉलेज, उनको वैदिक स्कॉलरशिप में ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास टाइम सुने हुए थे बस, when he was in the womb of his mother, and because of that he was so devoted to Lord Narasimha कि कि that
उन्होंने पूछा, उनके फादर ने, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा, हे ये सब चीजें ना, ये तुम मुझे बता रहे हो, इतनी इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट चीजें कहाँ से आ रही है तुम्हें? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले नॉलेज कहाँ से दी तुमने? कहते ये नॉलेज वहीं से आई है जहां से सब चीज आती है, आप में जो पावर है वो भी उधर से ही आ रही है और मेरी नॉलेज भी उधर से ही आ रही है। बोले ये कहाँ, ये क्या बात कर रहा है, मैं तो सबसे ऊंचा हूँ। बोले ये विष्णु से आ रही है मेरे को। अब दिस इज दैट पिस्ड हिम ऑफ। हिरण्यकशिपु वाज सो एंग्री बट ही वाज सो पोलाइट। उन्होंने अपने फादर का अनादर नहीं करा। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास जो नॉलेज है वो वहीं से आ रही है जहां पर आपकी पावर आ रही है, जहां से आपकी पावर आ रही है। बिल्कुल सिंपल चीज थी, सिंपल वे में प्रहलाद महाराज ने बोली, बट इट हैज मोर पावर देन लॉट ऑफ एरोडाइट स्कॉलर। पूरी जो वेदों की नॉलेज होती है उनसे भी ज्यादा, है ना। सो नाउ लेट्स लुक एट द टेक अवेज, है ना। व्हाट इज द टेक अवेज, है ना। सबसे पहला टेक अवे क्या है? किस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्ट डिवोशन? Simple and direct devotion of Lord is more powerful than sophisticated Vedic recitation. आप prolong like perform करो, एक बहुत बड़ा हवन करना शुरू करो, यज्ञ करना शुरू करो, not really powerful. सिर्फ simple glorification of Lord, simple, भगवान कृष्ण, आपने हमें बहुत दिया है, and thank you very much for providing everything. I understand your supreme personality of Godhead. These two lines are more powerful than all the Vedic scriptures combined together, because Vedesh sarve aham eva vedyo, है ना। शिला प्रभुपाद के साथ एक बार क्या हुआ कि there was this little girl, her name was सरस्वती, है ना, अमेरिकन लड़की थी छोटी सी। She will go and tell everyone. She will go and ask everyone. She was only 3-4 year old. She will go and say, "Do you know who is Krishna? Do you know who is Supreme Personality of Godhead?" And people will say no. Say Krishna is Supreme Personality of Godhead. And she will go to the next person. She'll say, "Do you know who is the Supreme Personality of Godhead?" They'll say no. Krishna is the Supreme Personality. And she'll keep going like this to different people. Srila Prabhupada saw this and he said, she is the Guru. Who is the Guru? Guru is someone जिसने तत्व को समझ रखा हो, है ना। देयर इज अ वर्स इन भगवत गीता, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तत्वदर्शिना, जो लोग तत्वदर्शी होते हैं वो कौन है? ज्ञानी, जो ज्ञानी है, दे आर तत्वदर्शी, दे नो द ट्रूथ। Who knows the truth? The people, a guru knows the truth. And and who is the guru? Guru is someone who knows who is Supreme Personality of Godhead. That's it. There is no other definition. Simple definition, There is deeper definition, but the simple definition is this. So this girl, Srila Prabhupada called Guru because she was so direct in her approach towards. That's why we need to be direct as well. Obviously, we have to be sensitive as well. Like my wife, I can't go to my wife and say, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. I can, and I've done it, but obviously it's gonna go into deaf ear. क्योंकि उसके लिए Supreme Personality of God is Jesus Christ, and which is okay if that's what she believes. But this is enough. This is enough. When I say Krishna is Supreme Personality of Godhead, that encompasses all the Vedic literature, all of it. Second point we discussed is language is secondary. It's not important कितना erudite हो. It doesn't matter आपकी grammar अच्छी है नहीं अच्छी है, आपका accent अच्छा है नहीं अच्छा है, आपकी English अच्छी है नहीं अच्छी है. Doesn't really matter. What matter is what is the subject matter you're talking about. That is most important. What are you presenting? Not how are you presenting. थर्ड इज भक्ति इनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग। तो उसके बाद क्या होता है? भक्ति मतलब व्हेन वी आर सो अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा ना, व्हेन वी अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा ओनली देन ही विल रिवील अस सब। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थितैव भजामि अहम। जो जिस लेवल का सरेंडर, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का मतलब होता है सरेंडर। ये यथा माम, जिस लेवल का मेरे ऊपर सरेंडर करता है, ताम तथैव भजामि अहम, उतना ही रेसिप्रोकेशन मैं करता हूं। जिसका जितना ज्यादा मेरे ऊपर समर्पण होगा उसको उतना ही मैं अपने आप को रिवील कर पाऊंगा। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। सो भक्ति जो है इट विल एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद लास्ट चीज, फोर्थ चीज है इंपॉर्टेंट ऑफ एसोसिएशन। जो हस्तिनापुर की जो विमेन थी, द रीजन वाई दे वर कृष्णा कॉन्शियस इज बिकॉज ऑफ द
एसोसिएशन ऑफ साधुज, पांडवास, और उनका जो जगह थी, पांडव उनके आजू बाजू के जो लोग थे, देवर ऑल हाईली एलिवेटेड साधुज इंक्लूडिंग पांडवस, उनके एसोसिएशन में लेके उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी थी, है ना। अभी हम लोग, आप लोगों को याद होगा कैंटो 1 में, इसी कैंटो में हम लोगों ने 8th चैप्टर में कुंती महारानी की प्रेयर्स के बारे में सुना था। हाउ इनक्रेडिबल इज हर प्रेयर, है ना। वो क्या करती हैं, वो कहती हैं भगवान मेरे को आप चाहिए, और जब जब मेरे पे परेशानी आई तब तब आप मेरे पास थे, अब मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई है तो आप छोड़ के जा रहे हो। तो आई प्रे टू द लॉर्ड प्लीज गिव मी मोर ट्रबल्स, क्योंकि जब मेरे पास ट्रबल्स आती हैं देन आई येल आउट फॉर यू एंड यू कम। तो भगवान मुझे तकलीफें दो ताकि मैं आपकी भक्ति और अच्छे से कर सकूं। जब मैं ये वर्ष के बारे में बात करता हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है। मैंने कहा भगवान सीरियसली मत लेना, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कुंती महारानी बोल रही थी वो बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इतनी औकात नहीं है मेरी कि आप मुझे परेशानी दो, अभी जितनी है वही नहीं संभल रही है ना। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ कुंती महारानी, नो एरोडाइट स्कॉलरशिप, जस्ट अ सिंपल, डिस्पाइट हर रॉयल स्टेटस, Kunti's association with great devotees and her own devotional service enabled her to express these prayers to Krishna. And this is only because of sadhu sangha. We need that sadhu sangha, है ना। दूसरा एग्जाम्पल आता है साधु संघ का, कि नारद मुनि जो थे, नारद मुनि वॉज द सन ऑफ मेड सर्वेंट, है ना। मेड सर्वेंट्स का कौन होती थी? मेड सर्वेंट्स वो होती थी जो राजाओं के साथ जो दासियां आती थी, वो दे यूज टू हैव बेबीज विद किंग। तो उनको कहते, तो ये जो नारद मुनि थे, मेड सर्वेंट के बेटे थे, उनको तो ही डिडंट इवन नो हु हिज फादर वाज, है ना। सो नारद मुनि वाज अ सिंपल 5 साल के बच्चे, है ना। और वो बाद में हाईएस्ट नॉलेज उन्होंने कैसे एक्वायर करी? बिकॉज वहां से जो मुनि लोग निकल रहे थे, उनकी माँ ने उनकी सेवा करी, उनके लिए प्रसाद बनाया, उन्होंने अपना जूठा प्रसाद दिया तो उनकी माँ ने अपने बच्चों को खिलाया, अपने बेटे को खिलाया, नारद मुनि को। एंड जस्ट बाय दिस एसोसिएशन ही बिकेम सबलाइम। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, एक वर्स है, क्या है? भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष अहि तीन बल, है ना। यही 3 बल। तो भक्त पद धूलि, जो भक्तों के पैर की धूली है ना। भक्त पद जल, भक्तों के पांवों को पखारा हुआ जो चरणामृत है। और भक्त भुक्त अवशेष, दैट मीन भक्तों का खाया हुआ जूठा। यही 3 बल, यही 3 है जो हमारी भक्ति में सबसे ज्यादा बल देते हैं। सो हम कई बार हम लोग सोचेंगे यार हम लोग कहाँ से लाएं भक्तों का चरणामृत, हम लोग कहाँ से लाएं भक्तों का जूठा, हम लोग कहाँ से लाएं भक्तों के पैरों की धूल। तो भक्तों की पैरों की धूल का सिर्फ लिटरल मीनिंग ये भी है, ऑब्वियसली वी शुड टेक देयर रज, बट देर इज अनदर मीनिंग इज वी शुड फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस, वी शुड फॉलो। क्योंकि जब भक्त जिस राह पे चल रहे हैं, उस राह पे जो मिट्टी उड़ रही है, हम उस मिट्टी को तभी अपने सिर पे ले सकते हैं व्हेन वी आर फॉलोइंग देम, राइट बिहाइंड देम। सो वी शुड फॉलो देम, एंड दिस इज व्हाट द स्टोरी ऑफ नारद मुनि टॉक्स अबाउट। तो अल्टीमेटली और दूसरी चीज क्या है कि डिवोटीज नीड नॉट टू वरी अबाउट देयर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। कई बार हम लोगों को लगता, आप लोगों में कभी किसी को लगता हो कि यार मेरे को तो इतनी है ही नहीं, है ना। सम पीपल टॉक अबाउट ऑल दिस वर्सेस, मुझे तो याद ही नहीं है वर्सेस, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी, बट इट इज नॉट द ऑल इन ऑल। देर इज अ गाय कॉल्ड, क्या नाम है उसका, और इज a Pakistani guy who talks all about Vedas and he knows all the verses and stuff. Zakir Naik. There's a guy called Zakir Naik. He knows all the verses. कौन सा है उपनिषद, ये वेदा, ये श्लोका, ये पूरा संस्कृत, उसका हिंदी ट्रांसलेशन, वो हिंदी तो नहीं बोलता है, उर्दू ट्रांसलेशन, जो सब बोलता है वो, है ना। बट उसका लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज कुछ नहीं है। He can cram everything, but I don't think he understands it. क्योंकि वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो. Does he know that the essence of all the Vedas is Krishna? If not, he is stupid. Because what he is doing is he's just reading it, remembering it, doing उसका कुछ भी ट्रांसलेशन निकाल के दे रहा है, and he thinks that he knows, है ना। That is not bhakti. That is not spiritual knowledge. That is stupid knowledge. Spiritual knowledge is something. कैसे पता अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि जाकिर नायक को
ज्ञान हो गया है, when he will become so humble that he is dripping with the love of God. He's not judging people for not being Christians or Muslim or Hindu or yeah. He's just spreading love of God. He's not spreading his dharma. He's just spreading love of God. He's just spreading lot of love, compassion. He's not spreading hatred and anger. Only then we can say, you know what, he understood. है ना? And that's not the case. So sincere, heartfelt devotion is the essence of bhakti, and that is always pleasing to Krishna. ध्रुव महाराज थे। ध्रुव महाराज भी जब 5 साल के थे, उनको भी जब भगवान के दर्शन हुए, उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, तो भगवान ने कॉन्च शेल उनके सर पे टच कराया, एंड सडनली ही कुड स्पीक erudite scholarly things. And Bhagwan, because he was given a lot of bhakti instantly, and suddenly because of that he could, once you have bhakti, everything whatever you say is amazing, it will be amazing, है ना? It teaches us कि हमें एज की भी जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, ये तो ध्रुव महाराज थे। ध्रुव महाराज वाज एटलीस्ट ह्यूमन। गजेंद्र, गजेंद्र वाज एन एलिफेंट, है ना? एक एलिफेंट जो ह्यूमन भी नहीं था, उसको संस्कृत तो क्या, वो बोल ही नहीं पाता था, संस्कृत तो बहुत दूर की बात है। When he actually called, he just took the flower out and called out to Bhagwan. He did not say, Om Namo Bhagavate Vasudev. Nothing, none of that thing, because he's a he's a Gajendra. He actually just took out the thing and thought of Krishna, and Krishna left his Singhasan. He just, उन्होंने गरुड़ को बोला मेरा भक्त को अभी चाहिए, वो मेरे को अभी पहुंचना है वहां पर। एंड गरुड़ इज द फास्टेस्ट बीइंग इन द होल यूनिवर्स। वो मन की गति से चलते हैं, और वो जब वो उसके ऊपर बैठ के आ रहे थे, ही वॉज एंग्री एट गरुड़ा, कह रहे थे इतना धीरे चल रहा है, मेरा भक्त परेशान है। तो वो क्या करा, वो कूद गए उधर से, है ना? ही एक्चुअली जम्प्ड फ्रॉम गरुड़ा स्ट्रेट टू किल द क्रोकोडाइल एंड सेव गजेंद्र। दिस इज द मर्सी। He was Gajendra, man. He was not even human. He was not, he was just a animal. Because he was in distress, he offered a simple prayer to Lord Vishnu, and everything, he was there. It's not about आप क्या हो, आप कौन हो, आप what age group you are, what gender you are, what family you were born, what circumstances do you have. Even it doesn't even matter what body do you have, animal, plant, or it doesn't really matter. What matters is how much devotion you have for Krishna. And this is the essence. And I'm going to leave you with some of the practical application. Is just as the ladies of Hastinapur talk about Krishna with simple devotion, we can keep Krishna in our daily conversation. Daily ना थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी से थोड़ा सा कृष्णा के बारे में बात करो, है ना? है ना? नहीं होता है तो just write something about Krishna. Just do, कहीं ऐसे नहीं है, अपनी just normal diary पे. Thank you Krishna for everything. Krishna, I'm so sorry I couldn't remember you today all day, but I know that you're there, and I'm so grateful for what you're giving me. And I'm so grateful for the things that you're not giving me. I know those things can impact my bhakti. So thank you for not giving me some of those things. I know that I'm an idiot. I know that I'm stupid, but you still have the same so much love for me. Thank you, Krishna. Write down this. नहीं होता तो किसी से पूछो, किसी से बात करो. Talk about Krishna on a daily basis. है ना? Don't worry about कि हम लोगों को कितने ज्ञान है, कितने श्लोक आते हैं, कोई जरूरत नहीं है. It's good to know shlokas, but it's not necessary. फिर उसके बाद associate with devotees, like make an effort, call a devotee at home, spend some time with them, talk about your, what you're struggling, what are your, क्या बोलते हैं आप लोग, ये क्या क्या winnings हैं, like what are your wins and losses, like wins and losses मतलब, यार प्रभु मैं this anartha I couldn't overcome so far, but Prabhu, this thing I was doing it before, not I'm not doing it, I'm so grateful, share that, so in conclusion, this verse encourages us to embrace heartfelt devotion and glorify the Lord in whatever language or way we can. It is not the complexity or scholarly depth of the words that matters, but the sincerity of our hearts and our focus on Sri Krishna. We'll stop here. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Anybody has any questions, any comments, any realization they want to share?
वो जी आपने जैसे बताया ना कि शबरी को इलिटरेट थी, वैसे एक दो एग्जांपल मैंने और भी सुने कि हाँ सुन, बोलो ना, बोलो एक प्रभु। वाल्मीकि वाल्मीकि थी जो थे, वो तो लुटारा था, वो लुटारे थे पहले, तो उनको भी वो भी एजुकेशन में जीरो थे। और हाँ, अपने ये वाले अपने जो कौन से बोलते किशोर बाबा, जो जो हमारे जो गौर जो किशोर दास बाबा जी। गौर किशोर बाबा जी, हाँ, वो भी इलिटरेट थे, तो फिर भी उनका भक्ति लेवल कहाँ से कहाँ था। वेरी सही बात है नाइस, प्रभु जी। वेरी नाइस। एंड इट इसीलिए ना, वी शुड नेवर थिंक दैट आई लैक एनीथिंग। Nobody, हम्म, none of you lack anything, to be honest. हम्म, And we all are so, क्या बोलते हैं उसको, we are so blessed कि at least, like देखो, today is what, it's a weekday. Monday is a weekday, and we are all sitting here and talking about Krishna Katha. I mean, if this is not mercy of Krishna, then what is? Make sense? It is. हम्म, That's why it's incredible. मैंने ना जो अपने क्लास नोट्स है ना, वो मैंने उसमें डाल दी अपने ग्रुप में। एनीबडी नीड्स टू हैव अ लुक एट इट, दे कैन लुक एट इट इन देयर ओन टाइम, एंड आई एम गोना ट्राई एंड डू दिस। क्योंकि मैं नॉर्मली वैसे नॉर्मल नोट्स बनाता था, लेकिन मैंने कहा ठीक है, नाउ आई डू इट अ लिटिल बिट मोर, सो दैट पीपल कैन पीपल हु मिस सम टाइम क्लासेस ना, उन लोगों के लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा। एनीवे, कैन यू गाइस सी मी, हियर मी? Yes, Prabhuji, we यस can. प्रभु जी। Just one realization, Prabhu. I used to always feel very guilty. So today's class is actually, taken the burden off my chest of remembering the verses. ओके, आई I नो। used to feel so pressure that, everybody recites these verses so perfectly and so nicely. And they actually remember when it is, in connection to that point. And I can हम्म, never remember them. I used to feel that I have some memory issue or what. But नो नो, today's class kind of gave me that confidence that it's okay. Even इट्स, if I don't remember, I know that which context is going on. And यस, I knew that I had heard that before. yeah, beautiful. And So this is thank you. important. Yeah, it is very very important for us to don't beat ourselves up, क्योंकि कलयुग में it's not important to become a scholar, but it's more important to actually get the essence. जैसे वो छोटी सी बच्ची थी ना, सरस्वती, she is much more learned than all of us combined together, because she was convinced that Krishna is supreme personality. हम लोग with theoretically we know, I know Krishna is supreme personality. Can I tell you, this is just my realization. कई बार मेरे को लगता था, नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड इट, आई अंडरस्टैंड कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड, बट if I really know Krishna is supreme personality of Godhead, if I really know Krishna has got my back, the first thing that will happen is I will not be scared. If in my life, if I'm scared, if I'm really really anxious, scared, that means I don't have that faith that Saraswati has. I actually don't. And this is the it's not a bad realization, good realization, in the sense that I know the reason why I don't have that is because I don't have that surrender. I don't have that surrender because I'm not that purified. अभी भी मेरे में और भगवान में difference आ रहा है. I still don't take him as my supreme savior, because if I did, then I won't be worried. For example, today अगर बिल गेट्स मुझे गोद ले लेता है, would I ever care about money? No, I will be fearless about money, ना. बट कृष्णा इज माई सुप्रीम पर्सनैलिटी, ही इज माई, उन्होंने गोद ले रखा है मेरे को, लेकिन मेरे को विश्वास ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को विश्वास है, आई विल बी एक्चुअली fearless. And this is how we can measure whether how much surrender do we have. Now, another thing is, life will give us so many lemons. है ना, life will give us so many lemons. What do you do with those lemons? Some people have left, right, and center. The life is giving them lemons from everywhere, every corner. What do we do with those lemons? And the first thing we can do with those lemons is, you take shelter of a place who make lemonade. you know you so you use those lemons. Now, everything that is going in our life is the cause is our own past karmas. No one else is responsible for it. राह पे चलते हुए मेरे को कुत्ते ने काट लिया है, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट डॉग, it's my fault. The reason why I'm saying this is, the day you take full responsibility of what's happening in your life,
the day you can actually step into that thing, you know what? If now whatever is happening is from my past karma, then I can't change today right now, but I can change my tomorrow by changing today. And that, if that is not giving you confidence, then obviously we need to just keep praying. We just keep praying, just keep praying, and never hesitate to share your heart with someone who you trust, because a lot of us are dealing with a lot of different stuff. When we share our plight with, and obviously don't share with everyone because you will become a, but share with some here and then. Guhyam Makhyachi Prichati. There is a verse in Nectar of Instruction. Guhyam Makhyachi Prichati Bhunte Bhonjayate Cheva Shadvithi Preeti Lakshanam. ये याद मितुल प्रभु आपने पढ़ा होगा ना? आप लोग, आपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कर लिया क्या भक्ति हाँ शास्त्री में? हाँ प्रभु जी, अभी जस्ट खत्म हुआ है। अच्छा, हाँ, ये दिस नहीं, इज, एग्जाम तो बाकी है, कल ही लास्ट क्लास से। हाँ, हम्म। नहीं, तो इसमें क्या था वो, कहते हैं ना कि लेना देना, छह छह प्रीति लक्षण होते हैं, उसमें से एक होता है गुह्यम आख्याति प्रचिति। दैट मीन्स कॉन्फिडेंशली शेयर योर हार्ट एंड लेट अदर पीपल शेयर देयर हार्ट टू यू। दिस इज पार्ट ऑफ भक्ति एज वेल, है ना? Anyway, so we need to understand that God is with us. We don't need to be erudite scholar, and we just, more simpler we are, the more simpler our lives will be. Don't make it complicated. प्रभु जी, इसमें क्या है कि चलो श्लोक याद नहीं रहते, चलो वो बात समझ में आती है, लेकिन कुछ टाइम पर क्या होता है कि जैसे होता है ना कि हम कहीं पे जाते हैं और कोई 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 वैसी वाली आर्ग्यूमेंट आ जाए जिसमें हमें लगता है कि नहीं Authenticate, ये authenticate. हाँ, हाँ, तो हमें हमें लगता है कि नहीं, हमें आंसर जो भी दे वो हमें अगर नॉलेज हो, हमें याद रहे ना, तभी जाके हम आंसर दे पाते हैं। वरना क्या हो जाता है कि हम फंस जाते हैं, जो यानी बीच में ही रह जाते हैं कि उस कैसे समझाए कैसे समझाए कैसे समझाए। तो हाँ। तो फिर मुझे नहीं पता था चलता कि उसका क्या करूँ मैं, कि तो तभी देखो, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मुझे याद रहता ना तो मैं किसी को हाँ, भी कुछ समझा दूँ। नहीं नहीं, वो याद रहना देखो प्रीचिंग पर्पस के लिए ठीक है, लेकिन डोंट बीट योर सेल्फ अप, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है प्रीचिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली कई बार ना मेरे को मैंने भी याद करा ना, तो मैंने कैसे याद करा, आई टेल यू हाउ आई डिड इट। मैंने भक्ति शास्त्री के जो की मेमोरी वर्सेस होते थे, उसको मैंने एक पेपर पे लिख लिया, डबल साइडेड, उसको लेमिनेट करा लिया, अपने डेस्क पे रखा। बिफोर आई स्टार्ट वर्किंग आई विल लुक एट दैट, आई विल रीड ऑल द वर्सेस विद देयर ट्रांसलेशन एवरी डे, है ना? आई डिड इट फॉर अ ईयर, है ना? एवरी सिंगल डे, अपने आप याद याद हो गए, ठीक है, अपने आप, क्योंकि उसको रोज पढ़ना जरूरी है। एवरी डे व्हेन यू रीड इट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, जस्ट रीड इट, रीड इट, रीड इट, रीड इट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड लिंकिंग इट मेरी लाइफ से। और मैं भगवान को क्या बोलता था, भगवान लुक, आई एम ऑल, आई want you to tell me what I need to focus on. One day one verse will stand out to me, oh, you know what, I need to do this. Someday other verse will stand out. But the idea is, but that is not the purpose actually. Purpose, shlok recitation wala is not the purpose. Purpose is we need to understand what is the essence. बट क्या होता है, हमारा मन भटक जाता है कई बार, और अगर हमें श्लोक याद है, जैसे देर इज अ श्लोक, आगमा पाइनो अनित्य से ताम तितिक्षु भारता, है ना? शीतोष्ण सुख दुखदा, भगवान कहते हैं, हाँ, ये जो जिंदगी है ये कैसी है, शीत और उष्ण, समर और विंटर, सुख और दुख आती रहेंगे, दे आर ऑल साइक्लिक इन नेचर। आगमा पाइनो अनित्य, जो आया है वो जाएगा, ये सब कुछ अनित्य है। अनित्य मतलब इट्स नॉट परमानेंट। आगमा पाइनो अनित्य से ताम तितिक्ष सो भारत, जो इस बात को जानता है, जो इस बात को अंडरस्टैंड करता है, ही इज कॉल्ड, तितिक्ष्व का मतलब होता है सोबेरिटी, ही इज सोबर। A sober person does not get bewildered by this. So sometimes when you remember these shlokas, it gives you some goosebumps, like, what am I doing? Get out of it. It helps. But and if you understand the tattva, when you understand there is a verse like this, you don't really need to recite that verse. It will take you out, because मत्ता है स्मृति ज्ञान अपोहनम च, भगवान ही देते हैं नॉलेज, रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस, सब कुछ भगवान ही देते हैं, है ना? इसीलिए डोंट वरी टू मच, बट यस, पुट इन एफर्ट,
when you put an effort to, जैसे मैंने बताया कि मैं तो लेमिनेट कर लेता था, एंड आई डिड लाइक 15 वर्ड्स, 15 वर्ड्स लिखे मैंने। 15 वर्ड्स को मैंने क्या करा, इट टुक मी 6 months, 15 वर्ड्स याद हो गए। फिर उसके बाद अगला अनदर 15, अनदर 6 months, ऐसे करके। एंड नाउ वट एवर, लाइक एवरी टाइम आई हियर अ रियली नाइस वर्ड्स, आई पुट इट इन माई लिस्ट। और फिर उसको जब भी मेरे को टाइम मिलता है, 10-15 हो गए तो उनको एक पेपर पे लिख के लेमिनेट करा and keep it on my desk, and it works. You can do that as well. But idea for today's class is, it's important for us to understand कि हमारा purpose क्या है, why am I doing it. अगर मेरे को ये सारे verses याद हैं, but I want to just impress people, then none of it will transform me. And guess what? It will not transform anyone else as well, because purity is the force. If your intentions are not pure, it won't work. You can't trick Krishna. He's the biggest trickster of all. You know? And again, Prabhuji, I remember just one verse where I can't, of course, quote which verse it is, but where they say, focus on the qualities that Krishna has given you to serve him. So for me, for Yes. example, reciting the verses might not be the quality that I have, but maybe making Yes. garlands or making jewelry or any other service that I can do. Or just being an amazing human being, and people look at you and say, oh, this Puja girl, oh, I know that she's Krishna's devotee, and look how amazing is she. That's it. Even that is actually much more preaching. There is I think Puja Matadi, I'd shared this before, where I don't know who said that, but they said, somebody asked Guru Maharaj, give me some personal instruction. He says, I want you to preach 24/7. And if necessary, you can speak as well. So he's saying your speaking doesn't really matter. Your behavior, your character, the way you carry yourself, the way you present yourself to the world, the way you come out of your problems, the way you handle your issues, the way when you're squashed all around, how you deal with those situations, that tells you who you are. Let that speak as a preaching. So yes, it's a good thing to memorize, but not really important, not that important. That makes sense. Yeah, thank you, Prabhuji. Yeah, it is. Thank you. Anyone else has anything they want to raise or share? Prabhuji, I have a realization that I would like to share, Please share. and which is actually from this weekend only. And Friday night and even Saturday, I had a very, very, very anxious. And when you're seeking, I think you also told me things will come to you, and you're constantly asking for your purpose and what is it, which I have been. However, and I do listen to a lot of those talks and videos and all those bits, but that morning, like 5:30, 6 o'clock in the morning, and I was sorry, I'm just actually. That's okay. So I opened YouTube, and there was this video from Oprah Winfrey, and of course she's talking about, and what an amazing video. And part of that video, it's a 30-minute video, and I mean, I'm listening to the audio only, but she's talking about God and the purpose and how things are arranged for us and what the God's plan is. And if things are not working for you, that is part of the plan, because you're probably not ready for the plan that you want to have. Yeah. And when you were saying the analogy of the lemonades just then, so it was like, yes, I am getting a lot of lemons from every angle. But after listening to that, Prabhuji, I've been listening to that video every day since. And wow. Because there's so much packed in that. And she's probably referring to Jesus, but for me, God is when she's saying, share it in our group. Krishna. Share it in our group. I wanted to take your permission, and I would love to share. But share it in this one, Srimad Bhagavatam group, yeah, because the people who are here, they will love to interact with it. Yes. It was just so profound, that so much points that you have said as well in some of the sessions, separately, but combinedly, I think it just hit me at that time. And I was in so much lightness that, if things are not working for me right now, it is because I am actually not ready. So that realization of that, you said, surrender, that he will take care of it. Yeah. He will just take care of it, and it's not my problem. Now it's his problem. Yes. But for me to accept him, it was very magical, Prabhuji. I can't explain it,
but I would love to hear other people's thoughts on that. Yeah, But beautiful. Put it on. I will share. So that was my realization, and That's amazing. yeah, It is incredible, Mataji. It's very incredible because I think आपकी जो आपने बोला ना अभी right now, this would have this actually inspires me a lot as well. Because sometimes what happen is there are some people in our life, they'll put things in perspective a little bit more than others, you know. And that is why we need to have this kind of company when we are actually trying to lift each other up, rather than, all the corporate, place where everybody is trying to pull you down, or they're trying to make numbers of their own. But here we are actually trying to share what's working for me so that it can help someone else. And that is such a beautiful thing, and that's what Krishna wants. We all are here, and we all are here to go back home, back to Godhead. The As I said to before, if you want to go fast, you need to go alone. But if you want to go far, then you need to be with people, people. And like-minded people. So Yes. thank you very much for sharing, Richa. Thank That's amazing. Thank you. Thank you, Mataji. All right. Thank you very, very much. Thank you very much for giving me this opportunity to share Srimad Bhagavatam with you. And I'm so grateful that I can do this seva. And thank you for engaging me. Thank you, Mithul Prabhu, for helping to serve this. It is very, very helpful Thank you to for us. this opportunity. Thank you. And I'm just waiting for Richa Gupta Mataji to, start giving a green signal so that she can be part of this group as well, where she can start preparing. I mean, in few months' time, whenever she is ready. 1 month, 2 months, 10 months, doesn't matter. But we would like to hear from you as well. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Thank you, Krishna. Thank Prabhu. you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.